हाय ऑल्सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे पालो अल्टो फायरवॉल को ईवीएनजी पालो अल्टो फायरवॉल को जीयूआई एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वेरी सिंपल स्टेप्स है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इमेज तो इंस्टॉल कर ली है पालो अल्टो की। अब मैं सिंपली इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। आपके पास पालो अल्टो इमेज होनी चाहिए पहले। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको इमेज प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें मैंने सीपीयू इंक्रीज कर देता हूँ ताकि जल्दी से बूट अप हो जाए। 2000 कर दी मैंने रैम। इमेज की जस्ट इंक्रीज किए कि मेरे पास बहुत है, 300 GB रैम है इस सर्वर में, तो इसलिए इंक्रीज कर दी ताकि जल्दी से बूट हो जाए। और मैंने नहीं तो पालो अल्टो फायरवॉल बहुत टाइम लेता है। अब इस इंटरफेस को कनेक्ट करना है हमें मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ। सो मैनेजमेंट इंटरफेस क्या करेगा बेसिकली, ये डीएचसीपी से आईपी डिस्कवर करेगा। तो एज सुन एज पालो अल्टो बूट अप इट विल गेट आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएचसीपी। सो ये जो नेटवर्क है, ये जो मेरा फिजिकल मशीन है, ये इसको आईपी दे देगा पालो अल्टो को। और जो आईपी मिलेगी वो आईपी वो आईपी लेके हम डायरेक्टली यूआरएल से इसको एक्सेस कर सकते हैं। वी विल आई विल शो यू हाउ यू कैन डू इट। सो गेटिंग boot up. So let's wait for a couple of minutes. Okay, so you can see here that it's already uh, got an IP address 192.168.17.130. So using this IP address, you can access this firewall via GUI. So, but first we have to change the password, default username password that only you can change via CLI. So let's wait couple of more minutes. ओके सो अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमें पासवर्ड डालना, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है एडमिन एडमिन। ओके सो अगेन वी हैव टू वेट couple of more minutes. Okay, so let's again try. Okay, now I can log in into it. So it will ask me to old password admin. I'm putting new password. You have to put a strong password, otherwise it will not take. So at least use one uppercase and one special character, and at least should be 8 character long. So here is show system, show interface management. And here you can see the IP address of 192.168.17.30. So let's put it in URL 17.130. 130. Sorry, 130. Always use HTTPS. Okay, here is it. So I have just installed latest 11 series VM, which is quite new. So I'm running on very latest version of Palo Alto VM. I can provide you this image if you want. Just comment on the YouTube video. I will provide. And here it is. So it's very simple process. You have to do nothing especially. Uh, just connect to the management interface that will get automatically IP address from DHCP. Check that what is the IP address. You can get later, or you can check that IP after boot up or during the boot up. So here we are. It's quite latest. So that's all. Thank you.